नमस्ते, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज है 9th ऑफ नवंबर। तो आज जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको लेके हम बातचीत करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एक फॉर्म का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं एंड आप अगर रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, मुझे सर्दी बहुत है, सो I'll be speaking a little bit slowly and gradually today, and we'll be trying to understand what are the movements that is going on because market right now today या अभी जो market जैसे जा रहा है एकदम हाई में चल रहा है and we'll be understanding what are the factors, how why is it moving and how it's going to move, कैसे move करेगा नहीं move करेगा और जो movement हो रहा है वो कितने दिन चलने वाला है और कौन कौन से फैक्टर्स है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जो भी न्यूज़ अभी मार्केट में आ रहा है these are most of the causes. I would rather say these are the more or less the byproducts, but these are the not the causes. So we have to figure out market अभी कैसा मूव कर रहा है, कहाँ पे मूव करेगा, किस जगह पे जाएगा और क्या मूवमेंट होने वाला है. So let's get started. So very big news actually. BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट. So बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है, in international economics, the balance of payment of a country is the difference between all the money flowing in a particular period of time, like into the country, out of the country. Basically, आप 10 रुपए कमा रहे हैं, 20 रुपए मतलब एक्सचेंज हो रहा है, मतलब आप कितना कमा रहे हो, कितना आप खर्चा कर रहे हो. ओके. सो मतलब इसका मतलब ये है कि आपका बाहर से कितना पैसा आ रहा है और आप बाहर देश में, मतलब देश से बाहर कितना जो है पैसा भेज रहे हैं. सो BOP में स्लिप इनटू 40 to 45 to 50 बिलियन डॉलर डेफिसिट इन करंट फिस्कल. सो इट्स नॉट एट ऑल अ वेरी बिग डील, पर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा दैट इट्स नॉट एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग बिकॉज द वे दैट इट इज हैपनिंग हियर इज व्हेन इट इज लाइक पहले आपका गला बैठा हुआ है, आई एम नॉट श्योर. सो आई ट्राई टू कवर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आई जस्ट मूव ऑन बिकॉज इफ आई कैन नॉट स्पीक सो व्हाट्स द यूज. एनीवे, सो यहाँ पे वही देखने को मिला दैट अगर आपका, तो क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, द डॉलर इज बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव. सो व्हेन डॉलर बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, सो सपोज आपका फिजिकल डेफिसिट क्या हो रहा है. पहले आपका 50 बिलियन डॉलर है, डेफिसिट है, यानी आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है. दैट मीन्स यू हैव टू बाई डॉलर फ्रॉम समवेयर. अगर आपको डॉलर खरीदना पड़ रहा है एट अ हायर प्राइस, देन द रुपी यू हैव टू पे मोर रुपी फॉर दैट. And when you're paying more rupee for that, you need more. I mean, you have to produce more rupee, so your the dollar becomes more expensive, the rupee becomes more weaker, and it in turns affects your internal economy. और internal economy का मतलब होता है कि जो एक बंदे का जो परचेजिंग कैपेसिटी है, दैट गोज डाउन. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल पहले हमें ऐसे एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ. पेट्रोल जो है, सोचो कि आप 50 रुपए में परचेज कर रहे थे, अभी वो 70 रुपए हो गया. तो जो लोकल बंदा है, जो जॉब कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसका सैलरी तो वैसे नहीं बढ़ा है, वैसे उसका सैलरी फ्लक्चुएट नहीं करता है. सो पहले अगर वो 10 लीटर परचेज करता था, अगर उसका प्राइस 20% बढ़ जाता है तो वो तो परचेज नहीं कर पाएगा ना. हिज परचेजिंग पावर विल गेट रिड्यूस्ड. ही विल नॉट बी एबल टू बाई 10 liter of oil because he needs more income. So this is where it actually affects the internal economy and uh, creates more inflation and more, I would rather say, purchasing power of the people goes down. And when the purchasing power of the people goes down, the consumption goes down and the economy goes down. गूगल के ऊपर CCI ने जो वो किया था, बैन नहीं, फाइन लगाया था, तो उसके ऊपर जो है बाकी देश के लोग जो है, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू मोनेटाइज. सो इट्स सिंपली वही चीज़ होता है कि बिकॉज गूगल इज अ मोनोपोली. सो गूगल उसका सुप्रीम कोर्ट में, US सुप्रीम कोर्ट में देयर वाज अ केस वेयर यू कैन नॉट हैव अ मोनोपोली. सो इफ यू आर अ मोनोपोली यू विल बी ब्रोकन डाउन बाय द गवर्नमेंट. So again, it's a very good way of the government to extract a lot of money from these companies as well. So यहाँ पे Australia, Germany, they are also trying to figure out how to extract more money from Google. A very sad thing though, India is still paying Russia in dollars for oil imports. So I think Vostro account तो खोल दिया गया था, तो उसमें तो वहाँ पे वो मतलब रुपी रूबल में डील होना चाहिए था. तो फिर से अभी आपका जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन कर दिया गया है. सो अगेन वी आर मूविंग बैकवर्ड्स. आई थिंक वी नीड टू गेट आउट. हाँ ठीक है, कुछ सेक्शन के लिए करना चाहिए, बट इंडिया इज गोइंग बैक अगेन. एंड वही चीज़ हमें देखने को मिलेगा. लॉट ऑफ ब्रेन ड्रेन विल हैपन एंड लॉट ऑफ पीपल विल बी मूविंग आउट ऑफ इंडिया बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड बिकॉज ऑफ reservation and whatever. Jaishankar makes it clear that India will buy more Russian oil, and that's obvious. Jaishankar is managing the whole thing altogether very well.
जब उनको पूछा जाता है कि भाई आप इंदा ले रहे हो वो ले रहे हो, तो वही बोलते हैं ना कि भाई we have a commitment to our Indian consumers. We need cheap oil because the way that America gets cheap oil for its consumers, we also need cheap oil. States asked to free national highway encroachment. So this is actually a very big news. बिकॉज आपको समझना पड़ेगा जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, यानी अगर आपको जो झोपड़ी झुग्गी जो है बेसिकली जो कब्जे वाला लैंड है उसको अगर हटाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप अपने सेंट्रल फोर्सेस को नहीं लगा सकते, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, राइट? सो स्टेट का काम होता है जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको हैंडल करना. नेशनल सिक्योरिटी इज समथिंग डिफरेंट, बट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सिक्योरिटी और स्टेट सिक्योरिटी इट इज हैंडल बाई दी स्टेट पुलिस. सो दैट इज द रीजन वाई. तो यहाँ पे आई एम नॉट श्योर हाउ इट वेल इट कैन बी implemented, because यहाँ पे वही वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है. So that's something needs to be taken care of. But this is a very important message which has been given from the center to the states. A very good news that हमें जो है रशिया से पोटैश निकल आने वाला है, because Russia is one of the largest producer of potash which is required for making fertilizer. Russia to buy more from India, मतलब इन रशिया भी जो है हमसे चाय परचेज करेगा compared to Kenya. India's first privately launched rocket likely in a week, which is also a very big news. Reliance unit to build smart city near Gurugram. So again, Reliance is going everywhere. So Snapchat is looking to capitalize the Indian market, because Snapchat is primarily for जैसे Instagram में okay, Instagram पहले sharing का होता था, अभी it's more like चमक चलो वाला scene है. तो Snapchat is all started as a चमक चलो वाला चीज़. So that's why they have opened up a $50,000 sound creator fund, because they want more and more creators to join their platform so they can attract more and more people. Like TikTok did. TikTok में वही किया था कि they were paying a lot of creators. Actually, TikTok also reached out to me as well when it was legal in India, and they asked us to join their platform to create more and more educational content. So I was doing more educational content, but other people do different entertainment, ये सारी जो होती हैं. So TCS is 2 billion BSNL वाला डील. अगेन द सेम थिंग, मैंने इसको पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BSNL का जो है बैकएंड का जो काम है, क्योंकि अगर इंडिया पोस्ट का अगर देखिए, इंडिया पोस्ट का जो भी बैकएंड वाला चीज़ होता है, वो चीज़ जो है वो आपका TCS देखते हैं. इंडिया पोस्ट का वेबसाइट भी अगर देखेंगे, वहाँ पे नीचे पेज के नीचे लिखा हुआ रहेगा इट इज़ डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय TCS. So TCS is right now kind of it's more of a rather than selling it off, what the government is doing is basically जो भी उसके प्रोसेस होते हैं अंदर का जो इंटरनल काम होता है, मेजर ऑपरेशंस होते हैं, दैट इज बीन आउटसोर्स. दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इफ यू गो टू BSNL बिल्डिंग्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता था, कुछ काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं. मे बी 10% to 15% ऑफ पीपल यूज टू वर्क. And a very big news, and it's actually a very very big news, Zoho has crossed $1 billion in annual revenue. So, again, this is something, it's a very huge news for at least Indian startups, because it shows that a Indian startup, or it's not a startup anymore, but an Indian business without any funding can grow and have $1 billion annual revenue, which is amazing, which is amazing. So $1 billion मतलब होता है अभी right now it's 80 to 100 crore every single year revenue. And this shows that in India, the best thing, we should be focusing on manufacturing, but manufacturing should mostly outsource. मतलब टेक्नोलॉजी को, जैसे अमेरिका क्या करता है, अमेरिका टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करता है. सो वी नीड टू हैव द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, सो वी कैन because we our land resources, our natural resources are very limited. So we have to use other people's land and resources, and our technology, our manufacturing system, our manufacturing establishment, the way that China is doing, the way that America is doing, so we can grow. And software is the biggest asset or the revenue generator for the Indian economy. Crude oil dips to $98, so still $100 के ऊपर जब भी रहेगा, it's becoming very difficult to have cheap energy or cheap fuel in India. Don't rush to buy Nykaa after bonus issue. Again, Office aims to raise revenue by 50 to 60%. What is Office? Office, it's basically co-working place. पहले आपका WeWork जैसा है. WeWork has burned a lot of investors' money, so be aware of that. FMCG company retailers to spend big on ad demands. So again, interesting stuff, because they want to increase their volume, because they are lacking the volume that they require to meet their target. So HDFC Capital ने invest किया है more than 1,500 crore in 6 strategic projects of SP. So what is SP? So SP is Shapurji Palonji. So Cyrus Mistry was the head of this company, and it was started by Palonji Mistry, and he's the Irish person, and from India but Irish.
and I think Ireland में it's the biggest, largest infrastructure company in Ireland, Shapoorji Pallonji, or rather Pallonji Group. Again, very bad news for VI. VI is trying to clear its debt because it's not able to pay back the debt, and also जो उसका interest है उसको भी pay back नहीं कर पा रहे because it's a loss making company. मेन इशू वही होगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे वही होगा कि प्राइमरली कॉलेजेस में जहाँ पे ये कोटा सिस्टम है, बिकॉज कोटा सिस्टम में क्या होता है, already EWS है, so they'll not be able to pay the premium fees, and that's why what you will see slowly and gradually, that is where I'm also working, that will completely move towards non. यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से मैं गवर्नमेंट के चंगुल से बच सकता हूँ, गवर्नमेंट के लाइसेंस से बच सकता हूँ. सो वही होगा कि मोस्टली इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स हाइब्रिड मॉडल, जहाँ पे यू कैन रीच आउट टू मोर पीपल, कन्वर्ट मोर पीपल, गिव आउट मोर डिग्रीज एंड स्टफ. सो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे ये कोटा सिस्टम ये सब आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा. रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन कैन बी मेड वेरी ईजियर, तो उसमें कोई इशू नहीं है. आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर मी. व्हाट हेल्प रियली हेल्प्स यू व्हेन यू हैव अ कोल्ड. सो आपको ये अदरक चाय ये सब पीना है. इफ़ यू हैव सोर थ्रोट, कंपाउंड में गार्गलिंग विद सॉल्ट, ये तो ऑलरेडी करना ही है आपको. एंड द सेम anyone need to do a gargle solution. Yeah, so this is very very important for me. So अगर आपको ऐसा हो रहा है, so please take advantage of it. Suzuki Motor raises sales forecast in India boost. I think it's very difficult. India is a market which is very price sensitive, and the way the prices of गाड़ी का जो प्राइस इतना बढ़ रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दैट. उसको होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है. बट क्योंकि अभी जो है डेट मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल है, सो दिस माइट बी ट्रू. बट अगेन दीज आर फोरकास्ट, यू कैन नॉट फोकस ऑन दिस. आपको इसके आप यहाँ पे थोड़ा सा पेसिमिज्म से देखना पड़ेगा. दे माइट बी डूइंग इट, सो जो सेंटिमेंट है वो बेहतर बनेगा, सो स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएगा. सो आई विल बी वेरी केयरफुल इफ आई हैव टू बाई एनी ऑटो स्टॉक, प्राइमरली सुजुकी मोटर. सो बिजनेस स्टैंडर्ड में हम आ चुके हैं. सो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इंडिया का बिजनेस हैज़ ग्रोन 77%. अमेजिंग अमेजिंग. KKR invest $400 million in Scientica Renewables. So you will see a lot of movement in the renewable market. But again, the problem with renewable is these are all technology driven. So technology अभी जो है 2 साल बाद it might be obsolete. So this is very very important that renewables में technology change होता रहता है. So अभी आपने invest किया, वो रिटर्न आपका आएगा कि नहीं आएगा, आपका जो आउटपुट आपको जो मिलना है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट. मार्केट न्यूज़ अगर हम देखते हैं, बिरला कॉर्पोरेशन पोस्ट 54 करोड़ लॉस, 56 करोड़ का लॉस. के गोदरेज कंज्यूमर प्रॉफिट फॉल कर रहा है. अगेन द सेम थिंग, शॉर्ट टर्म आपको बहुत सेल बहुत मिलेगा, बट यहाँ पे वही है, आप ओल्ड स्टॉक को क्लियर कर रहे हो. जुबिलेंट फूडवर्क्स नेट राइजेस, ठीक है. MRF का जो है प्रॉफिट एस्टिमेट मिस कर चुका है. लाल पाथ लैब का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फॉल्स 25% to 72 करोड़. या दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. भाई जो राइट नाउ इज वेरी अंडर हाईलाइट. भाई अगर कोई भी स्टार्टअप वाला बंदा है, प्लीज रीड अबाउट जो हाउ इट हैज स्टार्टेड and how it built a business with $1 billion. So this person is near about he is already a billionaire, and still धोती और simple short पहन के घूमते रहता है. Amazing stuff, amazing stuff. Central Africa CAR wants Indian firms like Vedanta to mine gold and uranium. The reason, because why? Because जब अमेरिका, चाइना ये लोग लेके आते हैं, they are not there to, business is one motive, but they want to change and control the whole न्यू, मतलब सीओडो कॉलोनाइज करना चाहते हैं. सो इंडिया वैसा मेंटालिटी नहीं है, बट दैट्स व्हाई दे विल बी प्रेफरिंग मोर. सो आई थिंक वेदांता, दे विल बी टेकिंग अप मनी एंड दे विल बी एक्सपेंडिंग देयर. एंड आई थिंक वेदांता के बाद कौन आएगा? अडानी आएगा. अडानी यहाँ पे आके माइनिंग करना शुरू कर देंगे. Great. Buying oil from Russia is our advantage. Gas running out of steam as demand in India wavers. So वही है, गैस का जो है, नेचुरल गैस का दाम, CNG का दाम बहुत बढ़ चुका है. नियर अबाउट 50-60% ग्रोथ हुआ है. पहले 46-48 रुपीज़ था, अभी 78 रुपीज़, डबल हो चुका है, नियर अबाउट डबल हो चुका है, which is not really good. Dependence on coal persists because we need coal for our thermal requirement, power generation. So right, slowly and gradually, renewable does not work, and we have to move towards nuclear slowly and gradually. I hope the government will focus on it and work on that. Very big news, uniform civil code to be implemented through states. Already the first state, अगर आपको पूछा था what is the first state that has implemented uniform civil code, it is Uttarakhand. Uttarakhand is the first state in India which has implemented uniform civil code. Ukraine war dims shine on steel. So steel market will be more or less, steel market I'm very not bullish. Reason, because स्टील सीमेंट इसमें क्या होता है कि इनपुट और एनर्जी रिक्वायरमेंट
जो होता है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं which is affecting it. So I'm not very keen on steel and steel, cement, which is dependent on coal and other energy resources and raw material. So again, we might see that there will be a change in America. Most probably, Donald Trump will come into play slowly and gradually. And yeah, and if Donald Trump comes, it will be very difficult for the other countries, not for America, because America then it will be, it will be clamping down on countries like India and stuff. They will be sanctioning us. They will be sanctioning China and everyone, because then they'll be like, मुझे क्या फायदा. So Biden रहने से थोड़ा सा they'll not act as much, but when Trump will be there, Trump will be acting very strictly, as it seems like. Front row seats to ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी. सो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि आपने 10 रुपए लगाया, तो मतलब जितना आपने इक्विटी है उस पर आपको इतना रिटर्न मिल रहा है. So return on equity means that the company is growing very fast, very fast. So that's quite good. So that's about it for today. Thank you for watching this video. Again, I'll try to 60 minutes. हो चुका है. Thank you. Take care. Bye bye. Jai Hind. I'll see you tomorrow. And you can join our Telegram group. You can ask your questions. The form is in the link. The link of the form is given in the description. Also, आप हमारे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, हमारे मेंबर बन सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारे डेटाबेस या जितने भी सारे न्यूज़ या पे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहता है. एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस and you get access to a lot of knowledge database. So thank you for watching this video. Take care. Bye bye. Jai Hind.